हेलो गाइस, वेलकम टू जनरल सिविल्स। आज से हम अपनी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने बल्कि नोट्स को हम क्रिस्प एंड कंसाइज करेंगे ताकि हम उनको बार बार इजीली हम उनको रिवाइज कर सकें और उनको एज इट इज़ हम एग्ज़ाम हॉल में रेप्लिकेट करके आ सकें ताकि हम 300 प्लस मार्क्स सोशियोलॉजी ऑप्शनल में स्कोर कर सकें। तो हमारा पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन और उसका पहला टॉपिक है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। इस चैप्टर्स के इस सब टॉपिक से आज तक लास्ट 10 ईयर में जितने भी PYQ आए हैं उसमें घूम फिर कर उसको सेम ही क्वेश्चन पूछना है और इस चैप्टर का वेटेज है 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में। तो हम जब उसने घूम फिर कर वही पूछना है तो हम उसी का एक रेडी टू मेड स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं जिसको हम डायरेक्टली कीवर्ड देखकर एग्ज़ाम हॉल में रेप्लिकेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ। Sociology emerged in 19th century Europe as a rational, secular and empirical response shaped by transformative revolutions। अब हम अपनी बॉडी की तरफ आते हैं। एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। रिमेंबर, हम पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4 ऐसे मार्क्स करेंगे रेदर देन हम बुलेट्स नहीं लगाएंगे, हम स्टार मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि इतने पॉइंट्स लिखे गए हैं। ह्यूमन बीइंग्स ऑन emergence from its incurred minority। Thinkers like Rousseau, Voltaire emphasized individuals' liberty, equality, secularism, and rational thoughts। Third, social contract theory, separations of power and critique of feudalism influenced early sociologists। Point number 4, Renaissance। Renaissance acted as a bridge between orthodox and critical thinking। Fifth, it revived
classical, Greco-Roman knowledge, promoting humanism, art, and scientific temper. Sixth point, it challenged the monopoly of church and encouraged inquiry into secular aspects. Seventh point, scientific revolution gave birth to empiricism. Eighth point, scientists like Newton, Galileo, Copernicus, Darwin developed empirical methods. Ninth point, these were adopted by Auguste Comte to study positivism and coined the term sociology. 10th point, commercial revolution led to rise of new middle class and expansion of banking system. 11th point, French Revolution dismantled feudal system while Industrial Revolution transformed life, which led to study of alienation and inequality. 12th point, the intellectual influences such as philosophy of history, biology, theories of evolution, and surveys of social conditions affected the emergence of sociology. Now, criticism.
The way of writing a sociological answer is thesis, then antithesis, which will finally conclude as synthesis. This is the way in which we should write a sociological answer. So we have written thesis, now we are going to write antithesis. First point, emergence of sociology is often seen as Eurocentric. Next point, sociology doesn't emerge automatically. It was a response to modern crisis. Third point, emergence of sociology is colonial, gender and class blind. Fourth point, Western ideas dominated non-Western world. So conclude with our synthesis. Despite above criticism, Durkheim's dictum, social facts must be treated as themes, reflects the emergence of sociology as a scientific discipline. So this is our final answer of any question related to emergence of sociology. So this is the answer of any question related to the emergence of sociology in your paper of sociology. But UPSC ने इसमें 3 और टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से एक है इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एक है एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूएसए और एक है मॉडर्निटी रेदर देन यूरोप की, यूरोप के अलावा कहाँ कहाँ और मॉडर्निटी आई। तो हम उन तीनों का भी स्मॉल 10 मार्कर का कंटेंट डेवलप करके रख लेते हैं, ताकि हम अगर नेक्स्ट टाइम वो हमें एग्जाम में दिखे तो हम उसको डायरेक्टली रेप्लिकेट वहाँ पे कर सकें। So let's begin with intellectual influences on emergence of sociology. Our first point in this question will be philosophy of history emphasized that society evolves from simple to complex stages. Our next point, it introduced the idea of social development and progress, which become central to sociology. Third point, it provided the concept of historical periods
and social types for analyzing societies. Fourth point, thinkers like Vico studied society as whole rather than isolated aspects. Fifth point, biological evolution theory reinforced the evolutionary view of social change and development. Sixth point, sociologists such as Herbert Spencer and Emile Durkheim compared society to an organism and explained social evolution. Seventh point, social surveys emerge to empirically study social condition, especially poverty, with the belief that understanding social realities will eradicate social problems. So this is our final note on any question related to intellectual influences on emergence of sociology. Let's move to next topic, that is emergence of sociology in USA. So our next subtopic is flourishment of sociology in USA. इसको भी सिर्फ एक बार ही यूपीएससी ने 10 मार्कर में पूछा है, तो हम इसका भी कंटेंट रेडी कर लेते हैं। इन केस कभी वो आ जाए तो आप दोबारा उसको रेप्लिकेट कर सकेंगे, रेदर देन कि आप वहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड होकर बैठ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग पॉइंट्स। एल्बिनो स्मॉल, father of American sociology, founded the first department of sociology at University of Chicago, emphasized research-based approach to study social problems. Next point, less
afterward introduced pure and applied sociology aiming to apply sociological knowledge to address real social issues. Third point, Jane Addams established Hull House providing education, healthcare, and support to immigrants, laborers, while leading social reform movements. Our fourth point, W.E.B. Du Bois highlighted racial injustice and co-founded NAACP, advocated for equality and civil rights for Black Americans. Fifth point, C.W. Mills and R.K. Merton analyzed structural flaws power elites and social institutions, emphasizing the need for reform to create a just society. Sixth point, American sociologists used research to address urban issues like poverty, crime, and immigration. The Chicago School studied communities and social disorganization to guide reform. So guys, this is our final script. For any question related to emergence of sociology or flourishment of sociology in the USA, let's move to our next topic,
सो गाइज, एज यू नो, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्निटी अदर देन यूरोप। इस पर भी यूपीएससी ने एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, 10 मार्कर का पूछा है, तो हम भी इसे बस 10 मार्कर का जितना ही कंटेंट रेडी कर लेते हैं, ताकि अगर आए दोबारा, अगर यूपीएससी इसको कभी रिपीट करे तो हम डायरेक्टली उसको रेप्लिकेट कर सकें। रिमेंबर, जो कंटेंट आपके पास आपके फाइनल नोट्स में होगा, आप उसी कंटेंट को एग्जाम हॉल में रेप्लिकेट कर पाएंगे। आप कुछ नए पॉइंट्स वहाँ जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कुछ न्यू पॉइंट्स वहाँ पर जनरेट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑल्सो। Modernity refers to, this is our introduction, substantial, tangible and visible change into social action, interaction, structure, phenomena and system. So let's generate our body. Non-European places where modernity begins. Our first point is Japan. Rapid industrialization and legal reforms in 19th century, called as Japan's Meiji modernization. Next point, China. Technological innovations and emergence of urban centers like Hangzhou and Suzhou, having trade networks with other parts of the world. India. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे तो इंडिया में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, मुगल्स को लिख सकते हैं, राजपूताना को लिख सकते हैं, जैसे सवाई जय सिंह का जंतर मंतर वगैरह वगैरह, बहुत से हमारे यहाँ पे इनोवेशंस हुए, मॉडर्निटी थी। लेकिन फिर भी हम एक परफेक्ट पॉइंट लिखते हैं जो कि अपने को एग्जाम हॉल में काम आए, और वो थोड़ा सा चाइना एंड जापान से डिफरेंट लगे। Mughal administration demonstrate bureaucratic efficiencies and legal structure resemble modern state function. Fourth point, Middle East. Ibn Khaldun recognized
as early sociologist or early thinker by many sociologists. Other Islamic world scholars developed astronomy, medicine, influencing global knowledge. Fifth point, that is Africa. Empires like Mali had organized commerce, urbanization, and social institution. So guys, this is the end of the very first topic of chapter number 1, that is sociology the discipline. और जैसे ही हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे तो आप देखना कि उसमें से उस चैप्टर में से आप मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम हॉल में स्कोर कर पाएंगे, और इसी कारण से हम दूसरों पर एक एज लेके जाएंगे, दैट इज एज ओवर अदर्स, and we will score plus 300 marks in our mains exam of sociology. So guys, this is the end of our class. कल हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे और उसको हम सिंप्लीफाई क्रिस्प करने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड कंपैरिजन विद अदर साइंस। तो देखिए आपने कैसे 2.5 पेजेस में सोशियोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक को एंड किया, डेट इज एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।